Assalamu alaikum. Welcome to Virtual University of Pakistan. My name is Sara Ahmed. The lecture on the course sta408 Design and Analysis of Experiment is going to deliver on the behalf of Virtual University of Pakistan. Let us define the course contents. Number 1. Introduction. In introduction, we will discuss about the important terms and concepts that are mainly used in the design and analysis of experiment. For example, we will see what is the term experiment and the treatment and factors used in that. What are the meanings of that terms? What is experimental unit? And we will discuss about experimental error, how it can occur and how it can be removed. Purpose of designing an experiment, what is experimental design, and what are the steps involving to design a good experiment. Secondly, we will see what are the basic principles of experimental design, that are randomization, replication, and local control. What is completely randomized design? How it can be described, its layout, statistical analysis, advantages and disadvantages. The randomized complete block design, उसको किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसका लेआउट किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, हाउ इट कैन बी एनालाइज्ड, उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या हैं, ये हम फर्दर देखेंगे. Replication within block, missing observations case in RCBD would also be studied. Then we will compare the efficiency of RCBD and CRD. The Latin square design, how it can be described, its layout, statistical analysis, advantages and disadvantages. The case when there are missing observations in Latin square design, efficiency of Latin square design would be discussed. Finally, factorial experiment क्या है, in which what are the main effects and interaction effects. Then we will discuss about the designs in factorial experiment when there are two factors each at two levels, also at two levels but three factor designs, their advantages and disadvantages would be studied. आइए अब मैं आपको इस कोर्स के लिए कुछ बुक्स के बारे में बता दूं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. These are the books you can consult, but I recommend you the most, which are two. Number 1 is this and this. This is the book titled as Introduction to Statistical Theory Part 2, and the authors are Professor Sher Mohammad Chaudhary and Dr. Shahid Kamal. इस बुक को कंसल्ट करने से आपको इस टॉपिक के बारे में बहुत सी हेल्प मिल सकती है. सेकेंडली, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ऑथर है डॉगलस सी मॉन्टगोमरी, 7th edition. The lecture number 1 is starting over here. Planning an experiment to obtain appropriate data and drawing inference out of the data with respect to any problem under investigation is known as design and analysis of experiment. Now, why all this
need to be done. Researchers usually want to assess or analyze, like which combination of protein and carbohydrate sources provides the best nutrition for growing lambs, or maybe how will long distance telephone usage change if our company offers a different rate structure to our customers, or someone wants to assess like under what conditions should I operate my chemical refinery given this month's grade of raw material. This technique, design and analysis of experiment, allows the researchers to design a good experiment, analyze their problem properly, and make a decision. Now we will see the very important term, what is experiment. इसकी definition है, an experiment deliberately imposes a treatment on a group of objects or subjects in the interest of observing the response. जो word इसमें यूज हुआ है response, as the name shows, it is outcome जो हम observe करते हैं after applying treatment to an experimental unit. इसमें एक और word यूज हुआ है objects और subjects. इसका मतलब है ऑब्जेक्ट्स यानी आप कोई थिंग्स पर अप्लाई कर सकते हैं, सच एज टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वट एवर. इवन आप इसको पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल पर भी अप्लाई कर सकते हैं, एनिमल्स पर, प्लांट्स पर, प्लॉट्स पर, इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑब्जर्विंग द रिस्पॉन्स. अगर आप स्टेटिस्टिकल सेंस में एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल्स देखें, दैट मे बी कैरिंग आउट अ सर्वे, measuring the daily rainfall, or recording the longevity of animals of a particular type. Now, what is treatment? In experiments, a treatment is something that researchers administer to experimental units. For example, a cornfield is divided into 4. Each part is treated with a different fertilizer to see which produces the most corn. Treatment basically अप्लाई किया जाता है एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पर, और इस एग्जाम्पल में कॉर्न फील्ड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और जो डिफरेंट फर्टिलाइजर्स अप्लाई किए जा रहे हैं, जो काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स अप्लाई हो रही हैं, वो ट्रीटमेंट्स हैं. इसको मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. A teacher practices the different teaching methods on different groups in her class to see which yields the best results. इस एग्जाम्पल में जो टीचर है वो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स प्रैक्टिस कर रहा है, तो इसमें जो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हैं वो आपके ट्रीटमेंट्स हैं. इसी तरह अ डॉक्टर treats a patient with a skin condition with different creams to see which is most effective. तो जो डिफरेंट क्रीम्स हैं इसमें जो पेशेंट की स्किन पे अप्लाई कर रहा है वो डिफरेंट क्रीम्स ट्रीटमेंट है. नाउ वी विल सी व्हाट इज फैक्टर. अ फैक्टर ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज अ कंट्रोल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अ वेरिएबल whose levels are set by the experimenter. A factor is a general type or category of treatments. Different treatments constitute different levels of a factor. Factor is basically explanatory variable or independent variable that is varied over different experimental units. अगर ये तमाम एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पे कांस्टेंट रखा जाए तो ये फैक्टर नहीं है, क्योंकि जो रिस्पॉन्स आएगा उस पर इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा. For example, if the water temperature in an experiment is held constant and equal for all tanks, it is impossible to determine a temperature effect. One more thing is that कि जो फैक्टर है उसके 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स होते हैं, और जो वैल्यूज ऑफ द फैक्टर्स हैं जो एक्सपेरिमेंट में यूज होंगी, दैट आर कॉल्ड लेवल्स. सपोज vitamin C is a factor
और डोजेज ऑफ विटामिन सी इज अ फैक्टर, तो विटामिन सी की जो टैबलेट्स हैं 250 mg 500 mg, ये एक्सपेरिमेंटर की चॉइस पे है कि वो क्या लेवल्स चूज करता है, और ये जो वैल्यूज हैं 250 mg 500 mg, ये लेवल्स हैं इस फैक्टर के। अगर एक्सपेरिमेंट में एक फैक्टर होगा देन ईच ट्रीटमेंट वुड कॉरेस्पॉन्ड टू वन ऑफ द लेवल्स, और अगर एक्सपेरिमेंट में दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे देन द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर लेवल्स वुड बी द ट्रीटमेंट। एज एन एग्जाम्पल, two factors having 2 and 3 levels respectively, यानी कि एक फैक्टर उसके 2 लेवल्स हैं और दूसरे फैक्टर के 3 लेवल्स हैं, तो 2 multiplied by 3 6, there are total 6 possible treatment combinations। ओके, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। आपके पास एक फैक्टर है विटामिन सी और इसकी डोजेज 0 mg 250 mg and 500 mg। Another is विटामिन ई डोजेज, और इसकी मेडिकेशन में हम 0 mg एंड 400 mg। दिस इज ट्रीटमेंट 1, ट्रीटमेंट 2, ट्रीटमेंट 3, 4, 5 and 6। इस एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर इज स्टडिंग द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन ई on health. There are 2 factors, dosage of vitamin C and dosage of vitamin E. The factor vitamin C has 3 levels, 0 mg per day, 250 mg per day and 500 mg per day. Vitamin E has 2 factor levels, 0 mg per day and 400 mg per day. The experiment has total 6 treatment. Treatment 1 is 0 mg of vitamin C and 0 mg of vitamin E. Treatment 2 is showing the dosage of 250 mg of vitamin C and 0 mg of vitamin E and so on. Experimental unit क्या है? By definition, the experimental unit is the basic entity or unit on which the experiment is performed. That is, it is an object to which the treatment is applied and in which the variable under investigation is measured and analyzed. ये ऐसी बेसिक एंटाइटी या यूनिट है जिस पे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आपके ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं और सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्री हो सकता है या ग्रुप ऑफ एडजेसेंट ट्रीज भी हो सकते हैं। एक लीफ हो सकता है या लीव्स हो सकते हैं। प्लॉट हो सकता है फॉर फर्टिलाइजेशन या लैंड जिस पे आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स अप्लाई करते हैं। एक पर्सन हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल भी आपके एक्सपेरिमेंटल यूनिट हो सकते हैं। एनिमल्स भी आपके एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हो सकते हैं। अब हम प्रीवियस एग्जाम्पल्स को कंसीडर करें, उसमें आप देखें कि एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या है। एक एग्जाम्पल हमने ली थी, a teacher practices the different teaching methods on different groups in her class to see
which yields the best results. और हमने इसको ट्रीटमेंट की डेफिनेशन के बाद कंसीडर किया था और उसमें हमने ये डिफाइन किया कि डिफरेंट टीचिंग मेथड्स ट्रीटमेंट्स हैं। अब ये डिफरेंट टीचिंग मेथड्स किस पे अप्लाई हो रहे हैं, जिस पर ये अप्लाई हो रहे हैं वो आपका एक्सपेरिमेंटल यूनिट होगा। और ये डिफरेंट ग्रुप्स इन क्लास पे अप्लाई हो रहे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है वो आपका एक्सपेरिमेंटल यूनिट है। Another example was a doctor treats a patient with a skin condition with different creams to see which is most effective. तो इसमें जो पेशेंट है या पेशेंट स्किन है वो आपके पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, जिस पे आप जो ट्रीटमेंट है क्रीम्स का, डिफरेंट क्रीम्स का, वो अप्लाई कर रहे हैं। सो अगर आप मेडिकेशन एनिमल्स पर कर रहे हो तो एनिमल्स आपके एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होंगे। इफ देयर आर फर्टिलाइजेशन ट्रायल्स, तो वो प्लॉट जिस पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट प्लॉट वुड बी द एक्सपेरिमेंटल यूनिट। एक्सपेरिमेंटल एरर, इट डिस्क्राइब्स द वेरिएशन अमंग आइडेंटिकली and independently treated experimental units. Experimental error क्या है? कुछ known sources की वजह से observations में variations produce होती हैं। इसके अलावा some variations are also produced by a large number of unknown sources such as uncontrolled variation in extraneous factors related to the environment, genetic variations in the experimental material other than that due to treatments. They are these unavoidable and inherent in the process of experimentation. These variations, because of their undesirable influences, are called experimental error. Experimental error means not an arithmetical error, बल्कि उन वेरिएशंस की वजह से है दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय सेट ऑफ अननोन फैक्टर्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंटर। द वेरियस ओरिजिन्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर इंक्लूड द नेचुरल वेरिएशन अमंग द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। समटाइम्स एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में कुछ नेचुरल वेरिएशंस, कुछ एनवायरमेंटल वेरिएशंस अकर करती हैं, जिस वजह से एक्सपेरिमेंटल एरर प्रोड्यूस हो सकता है। Inability to reproduce the treatment conditions exactly from one unit to another, मतलब ये कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पर ट्रीटमेंट कंडीशंस को प्रॉपरली मेंटेन ना किया जाए, यानी जो कंडीशंस एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट पे हों वही अगर सेकेंड एक्सपेरिमेंटल यूनिट के लिए सेम ना रहें तो एक्सपेरिमेंटल एरर प्रोड्यूस होता है। Another origin is interaction of treatments and experimental units, any other extraneous factors that influence the measured characteristics। जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो समटाइम्स कोई भी अननोन एक्सट्रेनियस फैक्टर एरर प्रोड्यूस कर सकता है। इट इज़ फर्दर इंटरेस्टिंग टू नोट that these errors introduced in the experimental observations by extraneous factors may be either of two types. Number one is systematic errors and maybe random errors. The errors arising due to an equipment or instrument or tool, or the error due to observers' fatigue, are examples of systematic error. Suppose a spring balance does not remain same, that maybe goes out of calibration। जब उसको continuously यूज करते हैं तो स्प्रिंग का sometimes बैलेंस मेंटेन नहीं रहता, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपका हो उसकी डिस्टर्बेंस से जो एरर अकर होगा दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। फॉर एग्जाम्पल एरर्स इन मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर सिस्टमैटिक एरर की टाइप हो सकती है। किस तरह कि ये अक्कर करे ड्यू टू पुअर थर्मल कॉन्टैक्ट
बिटवीन द थर्मामीटर एंड द सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर फाइंड करना है. On the other hand, the unpredictable variations such as experimental conditions or natural variations are the examples of random error. Random errors arise होते हैं जब random fluctuations हों in the measurements. Random errors को reduce किया जा सकता है by repeating the experiment many times. बट सिस्टमैटिक एरर को ओवरकम नहीं किया जा सकता इस वे में, बिकॉज सिस्टमैटिक एरर्स मे अकर ड्यू टू समथिंग रॉन्ग विद द इंस्ट्रूमेंट, और हो सकता है कि एक्सपेरिमेंटर उसे ठीक से यूज़ नहीं कर रहा. सो इस कंडीशन में मैनी टाइम्स रिपीट करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा और एरर कंसिस्टेंट रहेगा. व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन? An experimental design is a plan to collect the data relevant to the problem under investigation in such a way as to provide a basis for valid and objective inferences about the stated problem. What is plan? The plan usually consists of the selection of the treatments, specifications of the experimental layouts, allocation of the treatments, and collection of observation for analysis. In short, experimental design is the laying out of a detailed experimental plan in advance of doing the experiment. जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट का डिटेल्ड प्लान, यानी उसको कैसे रन किया जाए, वेरिएबल्स की सिलेक्शन, ट्रीटमेंट्स, फैक्टर्स, लेवल्स क्या होने चाहिए, डेटा को कैसे कलेक्ट किया जा सकता है, कौन से मेथड्स अप्लाई करने हैं, अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, इन सब का एक प्रॉपर कंप्लीट लेआउट कंस्ट्रक्ट करना एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है. एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन: गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फॉर मिनिमम एक्सपेंडिचर इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम. एक वेल चूजन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन मैक्सिमाइज करता है अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को जो कि कम से कम कॉस्ट और टाइम में हासिल की जा सकती है. इट हेल्प्स टू रिड्यूस द एक्सपेरिमेंटल एरर. जब आपका एक्सपेरिमेंट वेल डिज़ाइंड होता है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एरर्स, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किए हैं कि एरर्स की क्या टाइप्स हैं और मोस्टली किस तरह के एक्सपेरिमेंटल एरर्स अक्कर होने के चांसेस होते हैं. Another important purpose of experimental design is to ignore spurious effects if any. Spurious effect क्या होता है? कोई भी थर्ड वेरिएबल का इन्फ्लुएंस आपके एक्सपेरिमेंट पे स्पूरियस इफेक्ट कहलाता है. सपोज अगर कहा जाए कि आजकल आइसक्रीम की सेल इंक्रीज हो गई है और स्विमिंग पूल ड्रॉनिंग रेशियो भी इंक्रीज हो गई है. देखा जाए तो आइसक्रीम की सेल ज़्यादा होने से स्विमिंग पूल में डूबने का डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है. इट मे बी द क्लाइमेट इफेक्ट. समर सीजन में आइसक्रीम की डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है और लोग इस वेदर इफेक्ट की वजह से गर्मियों में स्विमिंग पूल पे ज़्यादा जाते हैं, जिस वजह से डूबने की रेशियो भी बढ़ गई है. सो बेसिकली आपका जो थर्ड वेरिएबल है समर सीजन इफेक्ट, वो स्पूरियस इफेक्ट है. मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं. 2 पेशेंट्स हैं जिनको ट्रीटमेंट देना है. पेशेंट्स आपके एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं और हमने उनको ट्रीटमेंट थ्रू इंजेक्शन देना है. अगर आप एक को इंजेक्शन ना दें और दूसरे पेशेंट को इंजेक्शन दे दें, देन उनको कंपेयर करने से पता चलेगा कि जिसको इंजेक्शन दिया वो पेशेंट में भी ठीक हो गया, तो हम कहेंगे कि इंजेक्शन में जो मेडिसिन है वो इफ़ेक्टिव है, जबकि एक्चुअली वो मेडिसिन इतनी इफ़ेक्टिव ना हो, मगर पेशेंट के साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ने रिकवरी में ज़्यादा रोल प्ले किया हो
कि मुझे इंजेक्शन लगा है, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये थर्ड वेरिएबल जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये स्पूरियस इफेक्ट है। इस इफेक्ट को इग्नोर किया जा सकता है बाय प्लानिंग अ गुड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। वो ऐसे कि हम ट्रीटमेंट कंडीशंस सिमिलर रखें एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पे, ताकि स्पूरियस इफेक्ट को इग्नोर करते हुए ट्रीटमेंट का इफेक्ट स्टडी किया जा सके। यानी पेशेंट्स की एग्जाम्पल जो हमने देखी उसमें दोनों पेशेंट्स को सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में रखा जाए, दोनों को इंजेक्शन दिया जाए ताकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट सिमिलर हो, मगर एक को मेडिसिन इंजेक्ट की जाए और दूसरे को पानी के इंजेक्शन दे दिए जाएं, मगर पेशेंट को यही लगे कि उसको मेडिसिन इंजेक्ट हुई है। इस तरह स्पूरियस इफेक्ट इग्नोर हो सकता है। The purpose of experimental design is also to evaluate and examine the outcomes critically and logically. Now we will see what are the steps involved in designing an experiment. A statistically designed experiment may consist of the following steps. Number 1. Statement of the problem should be clearly defined. कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप क्या एनालाइज करना चाहते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, ये चीज़ें आपकी क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। सेकेंडली, फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, आपका हाइपोथेसिस वेल फॉर्मुलेटेड होना चाहिए। चॉइस ऑफ रिस्पॉन्स और डिपेंडेंट वेरिएबल, सिलेक्शन ऑफ द फैक्टर्स टू बी वेरिड as well as choice of levels of these factors, such as कि आपने कौन से important factors हैं, कौन से factors को study करना है और उनके appropriate levels क्या होने चाहिए, fix होगा आपका, random होगा, qualitative या quantitative, ये चीज़ें भी before conducting an experiment पहले से define होनी चाहिए। How factors are to be combined, कौन कौन से फैक्टर्स का इंट्रैक्शन इफेक्ट इम्पॉर्टेंट है, उनको कंबाइन किया जाए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस टू बी टेकन, कितनी ऑब्जर्वेशन स्टडी की जाएं, जो सफिशिएंट होंगी उतनी ली जाए। मेथड्स ऑफ रैंडमाइजेशन को यूज़ किया जाए। मैथमेटिकल मॉडल टू डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट, मैथमेटिकल मॉडल केयरफुली कंस्ट्रक्ट हो जो आपके एक्सपेरिमेंट को बेहतर डिस्क्राइब कर सके। डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, ड्राइंग कंक्लूजन्स विद measures of reliability of the estimates of any quantities that are evaluated. Finally, the evaluation of whole investigation, especially with other studies on same problems, ये थोड़ी सी सिमिलर प्रॉब्लम्स भी अगर हों तो उनके साथ भी कंपेयर किया जाए। The basic principles of experimental design are randomization, replication, and local control. These principles make a valid test of significance possible. Randomization क्या है? It is a random process of assigning treatments to the experimental units. Through randomization, every experimental unit will have the same chance of receiving any treatment. Suppose आपके पास plots हैं for fertilization और 3 different kinds of fertilizers अप्लाई करने हैं through randomization. एक मेथड ये हो सकता है कि we use identical slips of paper और उन पे kinds of fertilizers mark कर दें. Then put the slips of a paper into a basket and mix them thoroughly. फिर हर यूनिट के लिए हम एक स्लिप ड्रॉ करें and use that treatment which is marked on the slip. इस तरह हर experimental unit के पास same chance है of receiving any treatment.
Randomization is also done by using tables of random numbers, by drawing numbered cards from a well-shuffled pack of cards, or by drawing numbered balls from a well-shaken container. Using randomization is the most reliable method of creating homogeneous treatment groups without involving any potential bias or judgments. Purpose of randomization क्या है? First is to remove bias and other sources of extraneous variation which are not controllable, because it is generally extremely difficult for the experimenters to eliminate bias using only their expert judgment. The use of randomization in experiments is common practice. Another purpose is to form the basis of any valid statistical test. जब ट्रीटमेंट्स को रैंडमाइजेशन के थ्रू अप्लाई किया जाता है एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पे, तो पर्सनल जजमेंट का एलिमेंट एलिमिनेट हो जाता है और ट्रीटमेंट्स के इफ़ेक्ट को प्रॉपरली स्टडी किया जाता है और वैलिड रिजल्ट्स गेन होते हैं. सपोज एक्सपेरिमेंटर पर्सनल जजमेंट की बेसिस पे डिसाइड करता है कि ये सॉइल टाइप बेटर है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी अप्रोप्रिएट हैं और फलां ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट बेटर आएगा, तो इन बेसिस पे जो रिजल्ट्स आएंगे वो वैलिड नहीं होंगे as compared to those results which we obtain through randomization. Replication क्या है? Replication is basically a repetition of the basic experiment. In other words, it is a complete run for all the treatments to be tested in the experiment. In all experiments, some variation is introduced because of the fact that the experimental units, such as individuals or plots of land in agriculture experiments, cannot be physically identical. This type of variation can be removed by using a number of experimental units. We therefore perform the experiment more than once, such as we repeat the basic experiment. An individual repetition is called a replicate. In short, replication का मतलब ये है कि whole experiment को repeat करना under identical conditions. जबकि repetition का मीनिंग ये है कि फैक्टर के कुछ लेवल्स को रिपीट करना, लेकिन कंप्लीट एक्सपेरिमेंट को रन करना अगेन एंड अगेन इज रेप्लिकेशन. फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट है, उसने अपने फैक्टर को कुछ इस तरह से लेवल्स दिए कि यहाँ पर वो दोनों लो लेवल्स अप्लाई कर रहा है, यहाँ पे हाई और सेकंड का लो है, यहाँ पर दोनों के हाई लेवल्स को ले रहा है और यहाँ पर इसका लो और सेकंड का हायर लेवल है. सपोज वो इन लेवल्स को रिपीट करता है तो ये आपकी रेपिटेशन है, या किसी इसको लेवल को रिपीट करता है तो रेपिटेशन. लेकिन अगर वो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को दोबारा से परफॉर्म करे इन्हीं लेवल्स पे, कि वो फिर से दोनों के लो लेवल्स, एक हाई और फिर लो ले, फिर दोनों के हायर लेवल्स, लोअर एंड हायर लेवल्स, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट दोबारा परफॉर्म करना इज रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन को क्यों यूज किया जाता है? टू सिक्योर मोर एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एरर, टू डिक्रीज द एक्सपेरिमेंटल एरर एंड देयरबाय टू इंक्रीज प्रिसिजन, and to obtain more precise estimate of the mean effect of a treatment. Replication with randomization will provide a basis for estimating the error variance. In the absence of randomization, any amount of replication may not lead to a true estimate of error. The greater the number of replications, greater is the precision in the experiment. What is local control? A term
referring to the amount of balancing, blocking, and grouping of the experimental units. Balancing means that treatments should be assigned to the experimental units in such a way that the result is a balanced arrangement of the treatments. Blocking means that like experimental units should be collected together to form a relatively homogeneous groups, or you can say that it is the arrangement of experimental units into groups or blocks consisting of units that are similar to one another. सपोज सॉइल फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक्सपेरिमेंटल फील्ड हेट्रोजीनियस है, देन उस फील्ड को होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाए, स्मॉलर ब्लॉक्स में. दिस काइंड ऑफ होमोजेनिटी ऑफ प्लॉट्स or experimental units ensures an unbiased comparison of treatment means. A block is also called a replicate. The main purpose of the principle of local control is to increase the efficiency of an experimental design by decreasing the experimental error. Replication की तरह local control भी एक ऐसा वे है जिसके थ्रू हम रिड्यूस कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं उन वेरिएशंस को जो अक्कर होती हैं ड्यू टू एक्सट्रेनियस फैक्टर्स, और लोकल कंट्रोल हेल्प्स टू इंक्रीज द प्रिसिजन ऑफ द experiment. So, finally, randomization is a method of eliminating a systematic error in allocation, thereby leaving only random error component of variation. और जो बाकी दो प्रिंसिपल्स हैं, replication and local control, both try to keep this random error as low as possible. There are two types of designs. Number one is systematic design and secondly randomized designs. Systematic designs क्या हैं? In systematic designs, treatments are applied to the experimental units by some systematic pattern, such as by the choice of the experimenter. For example, the experimenter wishes to test 3 treatments and he decides to have 4 repetitions of each treatment. The arrangements of 3 treatments over the experimental area could be, यानी सिस्टमैटिक डिज़ाइन एक ये हो सकता है कि वो ट्रीटमेंट ए की रेपिटेशंस प्लॉट में इस तरफ कर दे सिस्टमैटिकली, सेकेंडली वो ट्रीटमेंट बी अप्लाई कर दे यहाँ पर, एंड फाइनली ट्रीटमेंट सी की एप्लीकेशंस. एक तो ये सिस्टमैटिक डिज़ाइन हो सकता. इस तरह से सपोज वो ये समझता है कि ट्रीटमेंट बी जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो वो सिस्टमैटिक डिज़ाइन में एक्सपेरिमेंटर की चॉइस है, तो वो ट्रीटमेंट बी को यहाँ अप्लाई कर रहा है कि सपोज ए के इस साइड पे रोड है, तो रोड के साथ जो ज़मीन होती है वो समटाइम्स वीक होती है, यहाँ वहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशंस बेटर नहीं होती, तो एक्सपेरिमेंटर की चॉइस है कि वो अपना डिज़ाइन किस तरह से लेआउट करता है, तो उसकी पर्सनल जजमेंट है कि ट्रीटमेंट बी ज़्यादा बेटर है, तो वो इसको सेंटर में यहाँ वाले प्लॉट में अप्लाई कर देता है. सिस्टमैटिक डिज़ाइन का एक और वे ये हो सकता है, वो इस तरह से लेआउट दे अपने डिज़ाइन को कि ट्रीटमेंट ए को यहाँ पर अप्लाई कर दे, देन बी, एंड सी. Another design could be like this.
and finally one layout can be as this. Systematic designs have some advantages and disadvantages as well. सिस्टमैटिक डिज़ाइन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं. सपोज इन एग्रोनॉमिक ट्रायल्स यानी एग्रीकल्चर फील्ड में समटाइम्स प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग या डिफरेंट फर्टिलाइजर्स को टेस्ट करने के लिए कुछ एरिया रिक्वायर होता है. तो सिस्टमैटिक डिज़ाइन का एडवांटेज ये है कि एक्सपेरिमेंटर इंटेलिजेंटली या पर्सनल जजमेंट की बेसिस पर बेस्ट सॉइल टाइप वाला प्लॉट चूज कर ले, उस पे फर्टिलाइजर्स को इस तरह अरेंज कर सकता है कि बेटर एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड हों ताकि फर्टिलाइट रेट भी इंक्रीज हो जाए. उसकी पर्सनल जजमेंट की बेसिस पर फॉर एग्जांपल काइंड ऑफ बी फर्टिलाइजर बेटर रिजल्ट दे सकती है, तो वो सिस्टमैटिक डिज़ाइन के थ्रू एक एडिक्वेट एक्सपेरिमेंटल यूनिट यानी प्लॉट पे बेटर कंडीशंस में बी ट्रीटमेंट को अप्लाई करके उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है. बट एज वेल एज इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि ट्रीटमेंट में डिफरेंस को प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता. सपोज ट्रीटमेंट बी और ए इक्वली एफिशिएंट हो, मगर एक्सपेरिमेंटर की जजमेंट के बिहाफ पे ट्रीटमेंट बी बेटर रिजल्ट देगी क्योंकि उसने ट्रीटमेंट बी के लिए बेटर इन्वायरमेंटल कंडीशंस रखी हैं, एक्सपेरिमेंटल यूनिट चूज किया है. सो अगर रैंडमनेस का एलिमेंट हो तो ट्रीटमेंट डिफरेंसेस को बेटर स्टडी किया जा सकता है, जो कि सिस्टमैटिक डिज़ाइंस में नहीं किया जा सकता. सिस्टमैटिक डिज़ाइंस का एक मेजर ड्रॉबैक ये भी है कि कंक्लूजन्स एक्सपेरिमेंटर के एक्सपीरियंसेस से ड्रॉ होते हैं और कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई नहीं किए जाते. दैट्स वाई वैलिड रिजल्ट्स ऑब्टेन नहीं होते. एज कंपेयर टू सिस्टमैटिक डिज़ाइंस, रेंडमाइज्ड डिज़ाइंस एक बेटर चॉइस है. रेंडमाइज्ड डिज़ाइंस In randomized designs, as the treatments are applied randomly, therefore the conclusions drawn are supported by statistical tests. In this way, inferences are applicable in wider range and the random process minimizes the systematic error. The analysis of variance techniques भी randomized designs के लिए ज़्यादा suitable हैं. Classifications of randomized designs. Completely randomized design, that is abbreviated as CRD, randomized complete block design RCBD, and latent square design. In क्लासिफिकेशंस को, रैंडमाइज्ड डिज़ाइंस की इन टाइप्स को हम फर्दर लेक्चर्स में डिटेल से स्टडी करेंगे. बट बिफोर द डिटेल्ड लेक्चर, इन रैंडमाइज्ड डिज़ाइंस में क्या डिफरेंस है, इनकी लिटिल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, एक शॉर्ट ओवरव्यू लेते हैं कि ये डिज़ाइंस एक्चुअली क्या हैं. Example is, a market gardener wants to test 3 types of peas. Types हैं A, B and C on his land. He has a square plot which he divides into 9 equal squares, 3 to be planted with each type of pea. The problem which he then faces is which square to plant with which type.
एक मार्केट गार्डनर जो है वो 3 टाइप्स ऑफ पीस अपनी लैंड पे टेस्ट करना चाह रहा है और 9 इक्वल स्क्वायर्स हैं उसके पास, 3 हैं और उसको 3 टाइम्स ही प्लांट करना है उन पीस को, यानी कि 3 रेपिटेशन ऑफ ईच पी हो गई. सो one method is completely randomized design which might be like this कि वो randomly इसमें पीस प्लॉट कर दे. लाइक यहाँ पर ट्रीटमेंट C अप्लाई हो गया, यहाँ पर A, सो C, B, A, अगेन A, B, B एंड C. यानी इसमें रेपिटेशन कॉलम में भी हो सकती है और रो वाइज भी हो सकती है. जो रो है दैट इज बेसिकली ब्लॉक. तो इसमें आप देखिए कि एक ब्लॉक में सी ट्रीटमेंट 2 टाइम्स अप्लाई हो रहा है और कॉलम वाइज देखा जाए तो भी रेपिटेशन अलाउ है कि ए ट्रीटमेंट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है और सेम कॉलम में भी अप्लाई हो रहा है, सेम एज बी ट्रीटमेंट की भी रेपिटेशन है, सी की भी है. यानी कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. कॉलम वाइज रेपिटेशन भी अलाउ होती है और ब्लॉक वाइज रेपिटेशन भी अलाउ होती है. This would be alright if all the plots were equally desirable. If, however, there were prevailing north wind so that the northernmost plots were exposed, he might decide to use another design that is called randomized complete block design, where each of the types A, B and C is planted once in each west-east block. Like this randomized complete block design का लेआउट ऐसे हो सकता है कि आप यहाँ पर ट्रीटमेंट A अप्लाई हुआ, B, C, A, C, B, C, B एंड A. रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन में आप देखें कि ब्लॉक वाइज रेपिटेशन अलाउ नहीं है. यानी कि एक फर्स्ट ब्लॉक है तो इसमें A, B, C, ना A ट्रीटमेंट रिपीट हो रहा है ना B, नाइदर C. इसी तरह नेक्स्ट ब्लॉक में भी रेपिटेशन नहीं है और थर्ड में भी नहीं है. बट रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन में कॉलम वाइज रेपिटेशन हो सकती है. जैसे इस फर्स्ट कॉलम में आप देखें A ट्रीटमेंट रिपीट हो रही है, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि ब्लॉक वाइज रेपिटेशन अलाउ नहीं है. If the gardener also felt that the soil to the east was rather better than that to the west, he would use a Latin square design where each type of pea is planted once in each row and once in each column. जैसे CR डिजाइन में था कि कॉलम वाइज रेपिटेशन भी अलाउ है, यानी उसमें भी रिपीट हो सकती है, और रो वाइज रेपिटेशन भी अलाउ है कि ट्रीटमेंट उसमें भी रिपीट हो सकता है. RCBT डिजाइन में रो वाइज रेपिटेशन अलाउ नहीं है, कॉलम वाइज रेपिटेशन हो सकती है. रो में each type of pea is planted once in RCBT, and now in Latin square design each type of pea is planted once in each row and once in each column. ना तो रेपिटेशन कॉलम में अलाउ है और ना ही रो में यानी ब्लॉक में अलाउ है. द लेटिन स्क्वायर डिजाइन का लेआउट इस तरह से हो सकता है. B, C, A, C, A, B. Now you can see here कि ब्लॉक में भी कोई P की टाइप रिपीट नहीं हो रही और ना ही कॉलम में रिपीट हो रही है. दिस इज कॉल्ड लेटिन स्क्वायर डिजाइन. इन टाइप्स को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इनका लेआउट किस तरह कंस्ट्रक्ट होता है, इसकी डिस्क्रिप्शन किस तरह दी जा सकती है, इसका एनालिसिस किस तरह से है और इन रैंडमाइज्ड डिजाइन्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं. थैंक यू सो मच.